Hello student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor of tutoria.pk. In this video, we will be doing the exercise of your chapter 1, that is the cell structure and function. Let's start. So the first thing that we will be doing is the MCQs. The first MCQ is, which of the following is the major advantage using a light microscope instead of an electron microscope? Option A, superior resolving power. Option 2, constant depth of focus. Option C, observation of living matter. Option D, use of very thin section. So the right option is option C, observation of living matter. Some of the cellular organelles are bound by a single membrane while others have two membranes around them. Which of the following is correct? Single, इसका right option है option A, single membrane per oxysomes and lysosomes, and double membrane is nucleus and chloroplast. Which of the following cell structure contain the highest concentration of RNA? तो इसका right option है option D, nucleolus. Question number 4 है, a tadpole tail is gradually broken down during the metamorphosis into an adult frog. Which organelle increase in number in the cells of the tail at this time? ऑप्शन ए है सेंट्रियोल, बी है साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी है गोल्जी बॉडीज एंड डी है लाइसोसोम्स. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लाइसोसोम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली ऑलवेज कंटेन द डीएनए? ऑप्शन ए सेंट्रियोल्स, बी गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, सी लाइसोसोम्स, डी माइटोकॉन्ड्रिया. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया. Which distinguish a prokaryotic cell from a eukaryotic cell? Option A है prokaryotic cells have a cell wall and a nucleus. Prokaryotic cells have no membrane bonded organelles. Prokaryotic cells have a centriole. Prokaryotic cells have no ribosomes. जिसका right option है option B, prokaryotic cells have no membrane bonded organelles. The elasticity of a plasma membrane demonstrates that it is made up of imparts of lipid, nucleic acid, carbohydrate या प्रोटीन्स. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लिपिड्स. फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द फ्लैजिला एंड सीलिया आर माइक्रोफिब्रिल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोविलाई. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, माइक्रोट्यूब्यूल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स या वैक्यूल. राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेल मेम्ब्रेन. क्वेश्चन 10 है, द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्रोकैरियोट. बोथ स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल कंपोजिशन आर सेम. ऑप्शन बी है स्ट्रक्चर ओनली, सी केमिकल कंपोजिशन ओनली, डी नंबर ऑफ लेयर्स ओनली. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, केमिकल कंपोजिशन ओनली. क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड राइबोसोम्स. क्वेश्चन 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स. क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन मोर प्रोमिनेंट इन अ सेक्रेटरी सेल? लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स. राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, Golgi bodies. Question 14 है, when a glycoprotein is being synthesized for a secretion from a cell, which route is most likely to take? तो इसका right option है option C, rough endoplasmic reticulum to smooth endoplasmic reticulum to Golgi complexes. Question 15 है, which of the following is responsible for the cyclosis? तो इसका right option है option B, microfilament.